Okay, so let us start, or we should wait 1 or 2 more minutes. Am I audible to you? Yes, sir. Okay. Okay, so let us start. Okay, so I hope a blank screen is visible to all of you. And today we are going to define this product topology. So what is this product topology? First of all, we have been given two topological spaces. Suppose X, and let us denote the topology is tau X. Okay, and Y, and suppose that we have been given that tau Y. I mean, X and Y are topological spaces. So you know what is the meaning of topological spaces? I mean, some topology on X and Y we have been given. So that we have denoted by tau X and tau Y. So now you know how to define the product of two sets X, Y. So that X belongs to X and Y belongs to Y. Okay. So now in this new set X cross Y, we are going to give some topology, and that particular topology we are going to give this name product topology. Okay. So now before I give you the definition of product topology, can you recall that sub basis for a topology? I mean, is suppose a set X is given, and suppose S we have been given a collection of subsets of X. Okay, not S is contained in X. So what is this S? A collection of subsets of X. So can you recall what is the meaning of a topology generated by S on X? What does it mean? The smallest topology containing this. Very good. Topology generated by S means a smallest topology on X containing S. Yes. So now here we have been given this set X cross Y, and let us define a subset of this S like that. Let us define this B. What is this collection? U cross V, where U belongs to tau X and V belongs to tau Y. What does it mean? X cross Y and V is open in Y. B is a collection of subsets of X. Okay, so now the topology on X cross Y generated by this B is called a product topology. What is the definition of product topology? Topology on X cross Y generated by, oh, I think here I made a mistake, I think. This is all right. Topology generated by S is the smallest topology containing A. So this is all right. But the product topology, how we are going to define? If topology on X cross Y generated by B as a basis is called product topology. So first of all, are you convinced that this B will always give you some topology on, say, X cross Y? Because here we have taken product topology with this collection as a basis.
So now you know that if a collection of subsets we have been given, then it is not necessary that that will generate some topology as a basis. As a sub-basis, it will always generate, but as a basis may or may not generate. But for that, I think we have given a condition. Can you recall what was that condition? Basis के लिए क्या condition था? Suppose B we have been given a collection of subsets of X. A collection of subsets of X. So when this B is a basis, what was the first condition? I think first condition was that union of B. Union of yes, X is equal to B where B belongs to B. So this is the first condition. And what was the second condition? Second condition was that if X belongs to B1 intersection B2, then there exists B3 belongs to B such that X belongs to B3 and is contained in B1 intersection B2. Is it right? yes sir. Yes. So now, are you convinced कि ये जो हमने ले रखा है, ये B जो हमने define किया है U cross V, where U belongs to tau X, V belongs to tau Y. Okay, then this B will be a basis for X cross Y. Is a basis for some topology on X cross Y. Is it like that? सर इंटरसेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे दो सेट्स का इसमें? जैसे ऑर्डर्ड पेयर है तो ये ऑर्डर्ड पेयर में इंटरसेक्शन लाइक पोजीशन वाइज होगा इंटरसेक्शन? नहीं, इसमें इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? जैसे इस सेट में इंटरसेक्शन आप नहीं डिफाइन कर सकते. जैसे सपोज कर लीजिए हमने U1 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V2, तो ये इंटरसेक्शन क्या होगा? U1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन V2 नहीं होगा. ये तो होगा और क्या होगा? यस सर. तो इसमें पहली वाली कंडीशन तो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रही है कि अगर हम X इज इक्वल टू यूनियन U क्रॉस V, तो ये तो हो ही रहा है ना आपका. अगर जहाँ U क्रॉस V कहाँ बिलोंग कर रहा है? B पे बिलोंग कर रहा है. क्योंकि वैसे आप देखें तो आपका एक U तो खुद ही X है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा है? U बिलोंग्स टू tau X एंड tau X इज ए टोपोलॉजी. तो इसमें इस tau X में तो आपका 5 भी है, X भी है और X के प्रॉपर सबसेट्स भी हैं. तो ये जो U क्रॉस V हम ले रहे हैं यूनियन, so that is basically one of the members of this U cross V is X cross Y. तो ये इक्वालिटी तो trivially true है. Is it right? Yes, it is trivially true. And not only that, first condition, ये जो second condition है वो भी trivially true है. Let us see how. या अब अगर आप सपोज कर लें कि आपको वही ले लिया आपने, ये जो अभी आपने कहा ये हमने ले लिया, कोई भी दो मेंबर्स हमने B के ले लिए, U1 क्रॉस V1 और U2 क्रॉस V2. अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट X, Y जो है इसके इंटरसेक्शन में U1 क्रॉस V1 इंटरसेक्शन U2 क्रॉस V2, तो अगर ये इस इंटरसेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा कि X जो है आपका U1 U2 दोनों में है और Y कहाँ पे है आपका? V1 V2 दोनों में है. Okay, so what you will get? If this X, Y belongs to U1 intersection U2 cross V1 intersection V2. Okay, and that is definitely contained in this intersection. U1 cross V1 intersection U2 cross V2. Okay, तो इसमें आपका रोल प्ले कर गया ना आपका. So this is basically your V3, this is your V1, and this is your V2. So for every X in B1 intersection B2, always there exists a B3. Always there exists a B3 containing that point and containing that intersection. So the second condition is also satisfied. Second condition is also satisfying for the basis.
So that means what ये जो b जो हमने डिफाइन करा u cross v such that u is open in x and v is open in y. Okay, then this b is what? Then this b is a basis for some topology on x cross y. तो ये b जिस टोपोलॉजी की बेसिस है जो हमने लिखा है सम टोपोलॉजी. So basically this sum topology has the name product topology. So in this way this product topology is defined. अगर हमें x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस गिवन है तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी कैसे डिफाइन करेंगे? ये टोपोलॉजी ऑन x क्रॉस y for which this b is a basis. What is this b? Consisting of u cross b where u is open in x and v is open in y. सर u क्रॉस v कैसे होगा समझ नहीं आ रहा एक्चुअली. क्या सर वो इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही एक्चुअली. लाइक इंटरसेक्शन ये दोनों के इक्वल कैसे होगा उसके. u तो एक सेट है ना, तो u क्रॉस v तो बस दो सेट हो गए और क्या हुआ इसमें. इसमें क्या नहीं समझा एक बार दोबारा बताएं. सर u क्रॉस v का जो आपने इंटरसेक्शन लिया वो समझ नहीं आया. ये नहीं समझ में आया. यस सर. इसमें क्या दिक्कत है? ये तो सेट थ्योरेटिक इक्वालिटी है. आप अगर इंटरसेक्शन का क्या मतलब समझ रहे हैं? सर u क्रॉस v लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या इस केस में? और आप क्या समझ रहे हैं? सर लाइक आई थॉट कि लाइक ओके सर नाउ आई गेट इट. ओके सर क्लियर है. आप क्या समझ रहे हैं? ये तो हमने शुरू में ही बताया था. ये कहाँ लिखा है? ये क्या था ना, ये जो x क्रॉस y हमने कैसे डिफाइन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x क्रॉस? वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं ना, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x बिलोंगिंग टू x y बिलोंग्स टू y. ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन है ना क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. यस सर नाउ इट्स क्लियर. ओके सर. ठीक है. अच्छा ओके. फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज आल्सो क्लियर लाइक दैट कि अगर हम चाहे x क्रॉस y लिखे या फिर y क्रॉस x लिखे, बोथ आर आई मीन दे आर नॉट सेम. these two sets cannot be same क्योंकि ये दो different कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं, but as a product space they are homeomorphic. x cross y will be homeomorphic to y cross x. Can you think how? हम एक मैप डिफाइन कर लेते हैं x क्रॉस y से y क्रॉस x में, और वो क्या कर रहा है, वो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर xy को y, x पे मैप कर रहा है. तो व्हाट इज माय क्लेम हियर कि ये जो मैप f है दैट इज बेसिकली होम्योमॉर्फिज्म. होम्योमॉर्फिज्म के लिए हमें क्या चाहिए? 1 onto and 1 onto continuous and inverse continuous चाहिए. So now you can verify it. ठीक है. ये 1 onto तो ऑब्वियस है. कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी यू कैन इजीली प्रूव इट. कंटिन्यूटी के लिए क्या चाहिए? इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन. तो अगर आप यहाँ का कोई भी बेसिक ओपन सेट लोगे तो किस टाइप का दिखाई देगा? v क्रॉस u टाइप का होगा. जब आप उसका इनवर्स इमेज लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो u क्रॉस v हो जाएगा जो कि इसमें ओपन है. सो दैट्स व्हाई f इज कंटीन्यूअस. उसी तरीके से f इनवर्स भी कंटीन्यूअस हो जाएगा. तो ये f क्या हो गया? आपका होम्योमॉर्फिज्म हो गया. तो वैसे तो x क्रॉस y एंड y क्रॉस z are two distinct space, but they are homeomorphic. Okay, and if two spaces are homeomorphic, then they are identical. So this thing we will also discuss in coming class. So ये not only for two x and y.
In fact, let us take three spaces, x cross y cross z. आप पहले x क्रॉस y करो फिर z करो, या फिर x क्रॉस करके y क्रॉस z करके फिर आप x से मल्टीप्लाई करो. ओके, सो दीज टू स्पेसेस आर आल्सो होम्योमॉर्फिक. तो वैसे ही हम एक मैप डिफाइन कर लेंगे x क्रॉस y क्रॉस z से. आप मैप डिफाइन कर लें x क्रॉस y क्रॉस z, और यहाँ के किसी भी एलिमेंट को x कॉमा y कॉमा z, इसको कहाँ मैप कर दे तो x कॉमा y कॉमा z कर लें. तो ये जो मैप होगा आपका ये बाइजेक्शन हो जाएगा, और कंटिन्यूटी और इनवर्स कंटिन्यूटी वैसे ही आ जाएगी जैसे हम x क्रॉस y और y क्रॉस x के लिए बता रहे हैं. ठीक है, तो आई होप द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट टोपोलॉजी इज क्लियर टू एवरीवन. वैसे तो x क्रॉस y सेट है, उस पर डिस्क्रीट स्पेस डिफाइन कर ले, इनडिस्क्रीट डिफाइन कर ले, काउंटेबल को काउंटेबल, बहुत सारी टोपोलॉजीज आप डिफाइन कर सकते हैं. बट नॉट दैट एवरी टोपोलॉजी इज कॉल्ड द प्रोडक्ट टोपोलॉजी. आप प्रोडक्ट टोपोलॉजी किसको कहेंगे जब आप ये B से जनरेटेड है. If the topology on x cross y is generated by this B as a basis, then we say this as a product topology. So product topology has the unique definition. Okay. Now, with respect to this product topology, we are going to derive some results. So I think before that, let us come to the formal notes. Okay. तो ये अभी जैसे हमने बताया एग्जैक्टली वैसे ही इसमें डिफाइंड है कि हमें x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस गिवन है. हमने एक सेट V डिफाइन कर लिया u क्रॉस v, जो कि u जो है आपका x में ओपन है और v y में ओपन है. ओके, सो नाउ द टोपोलॉजी ऑन x क्रॉस y जनरेटेड बाय B एज ए बेसिस is called the product topology. So in this definition I have not explained that कि this B will always be a basis for some topology on x cross y. वो हमने अभी वहाँ रफ में explain किया. Here I have direct written that definition. वैसे in general we cannot define arbitrarily like that. कि अगर हमने कोई भी collection of subset ले लिया, so we cannot say that let us consider the topology with B as a basis. क्योंकि जो कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई भी collection given है तो वो basis होगा ही होगा. But here B is a basis that I explained. Okay. So now since B can be basis for some topology on x cross y, तो वो जो topology होगी उसी को हमने नेम दे रखा है product topology. Okay. And x cross y with this product topology we call the product space. And this x and y we will call the factor of x cross y or the quadrants of x cross y. उसके बाद अभी वही जो बताया कि अगर हम x cross y ले ले और y cross x ले ले, तो as a set they are different. They are two distinct product spaces, but they are homeomorphic. So not only two, in fact अगर हम कोई भी three ले ले तो वो भी हमें isomorphic होंगे, homeomorphic होंगे. Okay, and again the whatever reasoning I told you I have also written here. Okay. Now this proposition is very important. हमने x cross y ले लिया और x cross y को let x cross y be a product space. So who will explain what is the meaning of this first line? If I am saying that x cross y be a product space, it means that on x cross y we have taken the product topology. For any topology on x cross y different from that topology which we have defined above, we will not call this x cross y as a product space. So this is very important term. If we are saying कि x cross y be a product space, it means कि we have taken the product topology. So whatever the results we are going to derive here, so that is with respect to product topology, not with respect to any another topology. So suppose कर लो कि x cross y पे हमने product topology ले रखी है और x cross y is a product space. तो इसमें क्या करा कि ये जो हम projection map जो define करते हैं px and py, so we are first of all we are going to justify that कि under the product topology these projections are the continuous maps. And further a very important consequence, the product topology is the smallest topology such that all the projections are continuous maps. अगर हम x cross y पे कोई और भी topology ले ले, that is a different from product topology. But with respect to that topology, ये जो projection maps है वो continuous map है. तो ये जो product topology होगा वो contained होगा उस topology में. This is the smallest one. Okay.
And not only this is the smallest topology such that these projections are continuous, but we also have this real कि ये जो projections maps है, they are the open maps. And also we will give an example just after this proposition कि ये जो projections maps हैं that are always open, but may or may not be closed. ये closed होंगे इसकी कोई guarantee नहीं है, but that are always open. Okay, so it is not difficult. We have just 2-3 line proof in for all the lines. अब देख लीजिए हमने ये प्रोजेक्शन मैप ले लिया px जो कि x पे मैप कर रहा है, तो अगर आप px को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे, आप बताइए. आप ये दिखाओगे ना कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन. तो आपने u कोई भी ओपन सबसेट ले लिया x का, तो p इनवर्स ऑफ u क्या होएगा, u क्रॉस y. इज इट राइट? सही है सब? Yes, sir. Yes. और is it open in product topology? And if yes, then why? In fact, this is a basic open set in product topology. क्योंकि product topology के basic open sets क्या है? वो u क्रॉस v टाइप के हैं, जहाँ जो कि u x में ओपन है और v y में ओपन है. तो यहाँ पे u तो ऑलरेडी x में ओपन है, हम लेके ही चल रहे हैं, और y तो y में ओपन होता ही है. So that's why this u cross v is open in x cross y under the product topology. रीजन भी नीचे लिख दिया क्योंकि u x में ओपन है और y y में ओपन है. So that's why this px is a continuous map. तो जैसे आपने px को कंटीन्यूअस दिखाया वैसे ही py को भी कंटीन्यूअस हो जाएगा. क्योंकि अगर आप v कोई भी ओपन सबसेट लेते हैं y में, तो p इनवर्स ऑफ v क्या होगा, x क्रॉस v. और x क्रॉस v क्या है आपका, ओपन है प्रोडक्ट टोपोलॉजी में. So that's why this projection is also the continuous map. So under the product topology, the projections are the continuous map. ऐसा नहीं कि कोई भी arbitrary topology ले लेंगे तो projections continuous हो जाएगा. May or may not be. But next we are going to claim in this product topology is basically the smallest topology such that these projections are continuous maps. तो मान लिया हमने टॉ कोई भी टोपोलॉजी ले लिया x क्रॉस y पे. अब ये टॉ को जरूरी नहीं है प्रोडक्ट टोपोलॉजी, कोई भी टोपोलॉजी है, बट अंडर दिस टोपोलॉजी ये जो प्रोजेक्शंस है px एंड py दे आर द कंटीन्यूअस मैप्स. अब अगर आपका px और py कंटीन्यूअस मैप्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट विल बी ओपन इन टॉ. तभी तो ये px कंटीन्यूअस मैप है. एंड सिमिलरली this x cross v will also be open in top. Or it also you know that the intersection of two open set is open. So u cross y और x cross v, जब आप इसका intersection लेंगे तो क्या होगा, u cross v हो जाएगा. And this u cross v is open in top. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी बेसिक ओपन सेट लेते हैं, so that means what, this top contains all basic open sets of product topology. ये जो u cross v है जो कि u x में ओपन है और v y में ओपन है, so this u cross v is a basic open set under the product topology and which is also open in the topology top. So that means what, the product topology is contained in the topology top, or tau is finer than the product topology. So that's why we can say that this last line, the product topology is the smallest topology such that these projections are the continuous maps. So in fact, whatever we are defining here in the last 2.5 lines, so in some book you will find out कि यही हमें product topology की definition given है. What is given the definition of product topology? The product topology is a topology on x cross y. Product topology on x cross y is the smallest topology such that the projections are continuous maps. Such that the projections px and py are continuous maps. So in some books you will find out this is the definition. But लेकिन यहाँ पे हमने क्या definition लिया कि topology generated by basis v u cross v. तो दोनों topology सेम है, या तो हम वो कहें या ये कहें, meaning of both are same. If anybody have any query here till this, please ask. Then I will continue. ये जो proposition है इसमें जो हमने proof किया,
in this proposition, ये जो further करके लिखा है, in some book you will find out कि this is basically the definition of product topology. Product topology is the smallest topology such that Px and Py are the continuous maps. And this thing we have derived from the definition of product topology which we have taken. Is it alright? Is this explanation is okay? If product topology is the smallest topology such that the Px and Py are continuous maps. सही है सर, कुछ तो बोलिए. सर लास्ट पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए. लास्ट पार्ट सर यही कि ये यू लाइक एक और से ये फाइनेस्ट क्यों है, मतलब फाइनल क्यों है? आप ये बताइए फाइनल दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? फाइनल दिखाने के लिए ये दिखाना पड़ेगा ना कि जो हमारा प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, सपोज कर लो कि हमने प्रोडक्ट टोपोलॉजी को टॉ x क्रॉस y से डिनोट कर दिया, तो अगर हमें टॉ को दिखाना है कि दिस टॉ इज फाइनर देन द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, उसके लिए ये दिखाना है ना कि जो टॉ x y है वो किस में कंटेंट है? टॉ में कंटेंट है. ओके, यस सर. उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि यहाँ के सारे ओपन सेट यहाँ ओपन है. तो अगर हम ये दिखाते हैं कि इस टोपोलॉजी के जितने बेसिक ओपन सेट हैं वो इसमें बिलोंग करते हैं, तो ये टोपोलॉजी इसमें कंटेंट कर जाएगी. To prove that कि tau xy is contained in tau, what we have proved? This tau xy is generated by basis B. What is this B? U cross B, where U and B are open in x and y. ये जो tau xy है, यस सर. अगर हम ये दिखा दें कि B के सारे मेंबर इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो ये पूरी टोपोलॉजी इसमें कंटेंट हो जाएगी. और वही हमने दिखाया है. हमने क्या दिखाया कि जो U क्रॉस B है वो टॉ में कंटेंट कर रहा है. क्यों y टॉ में क्यों कंटेंट कर रहा है? बिकॉज़ दिस P इनवर्स U एंड P इनवर्स Py इनवर्स V, so they are open in tau. Why they are open in tau? Because the projections are the continuous maps. जब अगर ये दोनों ओपन है टॉ में तो उसका उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा. एंड P इनवर्स U क्या है? U क्रॉस Y. P इनवर्स V क्या है? X क्रॉस V. और इनका इंटरसेक्शन क्या है? U क्रॉस V. इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन. तो ये जो U क्रॉस V है वो टॉ में कंटेंट कर गया. इसका मतलब क्या हुआ कि इस टोपोलॉजी के जितने बेसिक ओपन सेट्स हैं वो टॉ में कंटेंट हो गए, इसलिए ये पूरी टोपोलॉजी टॉ में कंटेंट. ओके, सो दैट्स व्हाई सो फाइनली व्हाट वी हैव प्रूव्ड कि इफ वी आर टेकिंग एनी अनदर टोपोलॉजी सच दैट कि दीस प्रोजेक्शंस, ये Px है कि Px एंड Py आर द कंटीन्यूअस मैप्स, so that will definitely be the larger than this product topology. ये जो product topology होगी उस topology में कंटेंट होगी. यस सर. ओके सर. Now अब अंडर जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो Px और Py हमेशा ही ओपन है, बट मे और मे नॉट बी क्लोज. तो पहले ओपन है ये प्रूव कर लेते हैं. तो आपको पता है ओपन के लिए हमें जैसे अब तक जो करते आ रहे हैं कि किसी भी मैप को ओपन तब कहते हैं ना जब इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन. ठीक है, तो हमने G कोई भी ओपन सबसेट ले लिया x क्रॉस y का. तो हाउ एन ओपन सबसेट ऑफ x क्रॉस y will look like? An open subset of x cross y will look like union of u alpha cross b alpha over some indexing set. क्योंकि इसकी जो टोपोलॉजी है प्रोडक्ट टोपोलॉजी that is generated by this basis B, u cross b, where u and v are open in x and y. तो अगर प्रोडक्ट टोपोलॉजी का ये b basis है, so how an open set will look like? The union of basic open sets. So this G will be of type union u alpha cross b alpha, where alpha varies over some indexing set, where u alphas are open in x and v alphas are open in y. अब हमें ये प्रोजेक्शन Px को हमें ओपन मैप दिखाना है, तो हम दिखाएंगे इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन. सो Px G क्या हो जाएगा? That is union u alpha, and union u alpha is again open in x y because u alphas are open in x. So arbitrary union of open set is open. So union u alpha is open in x. So that's why this Px is open है. उसी तरीके से आप दिखा देंगे Py is open है. The way the product topologies are taken, so these projections are always a continuous one. Sure.
तो जैसे पिछले केस में हमने इंटरसेक्शन यू अल्फा और वी अल्फा में इंटरसेक्शन लाइक कार्टेशियन प्रोडक्ट स्प्लिट हो गए, तो यूनियन स्प्लिट नहीं होता ऐसे? वही तो हमने किया है, वही तो स्प्लिट ही तो किया है हमने। नहीं, इन जनरल लाइक यू अल्फा क्रॉस वी अल्फा का अगर यहाँ पे जो यूनियन ले वो यूनियन यू अल्फा इनटू यूनियन वी अल्फा, ऐसा नहीं होगा? ये दोनों इक्वल है? ओके सर। Okay, but these projections are not the closed maps. ये open map होगा लेकिन closed map नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए हमने counter example दिखा दिया। तो let us see how this counter example I have shown. ये हमने R cross R से R में मैप डिफाइन कर लिया, प्रोजेक्शन मैप। ये P1 P2 हमने डिफाइन कर लिया कि XY को X पे मैप कर रहा है और XY को Y पे मैप कर रहा है। जो उधर हमने PX PY लिख रहे थे उसको हमने 1 2 कर दिया। तो now I claim कि ये जो प्रोजेक्शन मैप्स है P1 and P2, so they are not closed. तो उसके लिए हमने क्या दिया, क्लोज, अगर क्लोज मैप्स नहीं है तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, हमें R क्रॉस R के क्लोज सबसेट चाहिए जिसकी इमेज क्लोज ना हो। तो आर यू कन्विंस कि हमने जो A और B दो सबसेट्स जो डिफाइन किए दे आर द क्लोज सबसेट्स ऑफ R क्रॉस R। हमने डिफाइन किया XY such that XY is equal to 1 where A is greater than 0, और एक डिफाइन किया XY such that XY is equal to 1 A is not equal to 0। तो आर यू कन्विंस कि A and B are closed subsets of R क्रॉस R? ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, आपने पढ़ा होगा मैट्रिक प्लस 10+2 में। जब x क्रॉस y में अगर आपने x ग्रेटर देन 0 ले लिया तो ये केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जब आपने x नॉट इक्वल टू 0 ले लिया तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो कैन यू एक्सप्लेन दैट कि व्हाई दिस a एंड b आर क्लोज्ड इन R2? सर इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। इनका कॉम्प्लीमेंट होता है, और वैसे भी कोई भी कर्व लेंगे तो क्लोज होता है। उसका रीजन भी वही है क्योंकि इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये ईयर भी क्लोज हो गए। और अंडर P1 एंड P2 जो है, अंडर P1 जो है, चाहे P1 P2 कोई भी ले ले, अगर आप P1 ही A की इमेज क्या है 0, इन्फिनिटी, और अंडर P2 भी जो A की इमेज होगी वो 0, इन्फिनिटी ही होगी। ओके, और जो B की इमेज होगी वो क्या होगी R-0। तो दे आर नॉट क्लोज। R-0 is open, 0, infinity is open, but A and B are closed. So here the image of closed set is open, they are not closed. So that's why P1 and P2 are not closed maps. Okay, तो इसका मतलब क्या हमने करा कि ये जो हमने जिस तरीके से टोपोलॉजी डिफाइन की X क्रॉस Y पे प्रोडक्ट टोपोलॉजी, तो ये प्रोजेक्शन मैप्स हमेशा ही कंटिन्यूअस है। Further, product topology is the smallest topology such that Px and Py are continuous maps. Px and Py are always open maps, but they may or may not be closed. So these are the some important facts which we discussed here. Okay. Now next we are going to derive a important result. कि अब अगर सपोज कर लो कि हमें x और y जो स्पेस है इनके बेसिस गिवन है, बेसिस गिवन है। हमने मान लिया कि C और D जो है वो बेसिस है x क्रॉस y का। ओके, सो नाउ वी हैव डिफाइंड ए न्यू कलेक्शन B C क्रॉस D where C belongs to this C and D belongs to D. Then this new collection will also be a basis for product topology. So it is also, and also you know that for a given topology it is not that the basis is unique. We can have more than one basis. Okay, so the basis of this product topology, you know that U cross B where U is open in X and B is open in Y, but still here we have taken another collection, and this collection we have defined with the help of a given basis on X and Y. तो अगर मान लें कि X और Y पे बेसिस हमें C और D given है, इस C और D के हेल्प से हमने एक नया बेसिस डिफाइन कर लिया, that is this nothing but this C cross D. So C cross D का क्या मतलब है कि C cross D where C belongs to C and D belongs to D. So this new collection will also be a basis for product topology.
So it is not difficult at all. We have just two 3-line explanation. ये हमें क्या प्रूव करना है? ये जो C क्रॉस D है, that is C cross D, where C belongs to C and D belongs to D. We have to prove that कि this C cross D is a basis of product of. So can you recall how to prove that कि a set is a basis? If you recall, so here earlier we have defined an alternate definition as well. Can you recall that one? अगर हमें ये प्रूव करना है कि B जो है वो बेसिस है X का, तो हम क्या प्रूव करेंगे कि for every U belongs to X, I mean for every open subset of X, or we can also for every U belongs to top and for every X belonging to U, there exists B belonging to B such that the X belongs to B and B is contained in U. Okay, then we say that this B is a basis. Is it right? Can you recall that? Yes, sir. Can you recall that? ये basis हो जाएगा फिर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. Okay, so now the same definition I am going to apply to prove कि जो C cross D है वो basis है product topology का. तो हमने क्या किया कि suppose कर लिया कि G कोई भी हमने open set ले लिया. Let G be open in product topology. इसका मतलब क्या हुआ? For every xy belongs to G, there exists U cross V such that xy belongs to U cross V is contained in G, where U is open in X and V is open in Y. Is it right? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन है कि ये टोपोलॉजी जनरेटेड बाय U क्रॉस V एज ए बेसिस. इसका मतलब क्या होगा? अगर हम कोई भी एलिमेंट G का लेते हैं X, Y, then we get an element of type U cross V which is like that. Is it okay? Okay. So now further this containment will give you what? This containment will give you X belongs to U and Y belongs to V. Okay. जहाँ U क्या है आपका? V is open in Y and U is open in X. And हमें क्या given है? कि C basis है X का और D basis है V का. So that means what? कि there exists C belongs to C and D belongs to this D such that दोनों के लिए इकट्ठा लिख दिया. X belongs to C is contained in U and Y belongs to V is contained in Y belongs to D is contained in V. क्यों? क्योंकि U open है X में और X U में belong कर रहा है और C basis है X का. So we get a basic open set containing X contained in U and similarly we get a basic open set V at D containing Y and contained in V. So finally what we get? We get that if this XY belongs to C cross D contained in U cross V is contained in G. Okay, so finally what we have constructed? If for every XY belongs to G, there exists C cross D belongs to this C cross D such that the XY belongs to C cross D and is contained in G. Therefore, this C cross D is a basis of product. Is it right? Say yes or no.
Yes, sir. Yes. So what I explained, the same thing I think I have also written here in these notes. So again, let us see once again. तो अब हमें क्या दिखाना है कि हमें ये दिखाना है कि ये जो B जो है C क्रॉस D, that is a basis. तो इसके लिए हमने ये क्या दिखाया है कि पहले तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो every member of this B, C क्रॉस D is open in X क्रॉस Y. Why? Because C is open in X and D is open in Y. So C cross D will be open in X cross Y. So that's why every member of B is open in X cross Y. Next, what we have done, on same pattern as I was trying to explain earlier. Here might be some different explanation. हमने X Y कोई भी element ले लिया G का. Okay. So again, as I told you, we get a basic open set U cross B containing this element and contained in G. जहाँ U क्या है आपका ओपन एनवीडी है X का, V is an open एनवीडी of Y. अब चूंकि C बेसिस है, तो now corresponding to this C, there exists CX such that X belonging to CX and CX is contained in U. Similarly, आपका चूंकि D बेसिस है Y का, so there exists DY, Y belongs to DY and Y is contained in V. So we get this one. XY belongs to CX cross DY is contained in G. So from here we can also stop. I think here I have given one more explanation. Okay. So here also our explanation is complete. कि जो C cross D है, so that is the basis of X cross Y. Okay, but here I have written one more line. What this last line implies? This last line implies that G is equal to union of Cx cross dy where xy belongs to G. So that means what? This G we have written as the union of the members of C cross D. So that means every open set we have written as the union of the members of C cross D. So that's why this B is a basis. और वैसे भी ये जो हम जो डेफिनेशन बता रहे थे बेसिस का यहाँ पे this one. Sir? हाँ, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कि B basis X है, इसका मतलब क्या हुआ कि for every open set U and for every X in U there exists B belonging to B such that X belongs to B, B is contained in U. So basically इसका मतलब क्या है? This implies that कि U we have written union of B, let us say Bx over some indexing set. I mean every U can be written as the union of B. So that's why this B is a basis. तो या तो हम ये लिखे लास्ट में ये कंक्लूड करें या फिर यहीं पे छोड़ दे the meaning of both are same. So these are the equivalent statements we have already done earlier. हाँ आप बताएं क्या कह रहे थे? तभी we only showed this ना कि अगर C cross D से अगर हम लोग टोपोलॉजी जो जनरेट कर रहे हैं उसके अंदर U cross V वाले एलिमेंट्स भी ओपन है तो उससे वो इक्विवेलेंट वही है ना? बिल्कुल हो जाएगा. ओके सर. Okay. Now here we have some important facts about this product topology. Okay. So now what these important facts? So and also they are the very important ones. So you have to look carefully. कि अगर हमने एक नया कलेक्शंस बना लिया, एक कलेक्शन we have taken, Px inverse U where U is open in X and Py inverse V where V is open in Y. इन दोनों का जो यूनियन अगर हम लेते हैं Px inverse U and Py inverse V, so that will form a sub basis for the product topology. So this we have tried to explain here कि why this collection S will be a sub basis for the product topology. क्योंकि अगर ये सब बेसिस है इसका मतलब क्या हुआ कि इनका हम फाइनाइट इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो बेसिस होना चाहिए एंड दिस इज एग्जैक्टली द केस हियर क्योंकि ये जो Px inverse U है, व्हाट इज योर Px inverse U? Px inverse U is nothing but U cross Y. And what is your Py inverse V? Py inverse V is nothing but X cross V. तो अगर हम इन कलेक्शंस का सेट ले ले U cross Y where U is open in X and X cross V where V is open in Y, तो ये जो कलेक्शन हो जाएगा वो सब बेसिस हो जाएगा प्रोडक्ट टोपोलॉजी का. Let us see भाई, because we know that कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी की जो बेसिस है वो क्या है? U cross V where U is open in X and V is open in Y. और ये जो कलेक्शन लिया है इनके अगर हम इन एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन ले,
अभी ये टेक्निक पीछे भी हमने किया था कि px इनवर्स u इंटरसेक्शन py इनवर्स v। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली हम कंसीडर कर रहे हैं u क्रॉस y इंटरसेक्शन x क्रॉस v, और ये इंटरसेक्शन क्या होगा, u क्रॉस v होगा, जो कि ओपन है। तो अगर वो सब बेसिस है, इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शंस लेंगे तो वो बेसिस फॉर्म करेंगे, वही कर रहे हैं यहाँ पे। सो फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ S form a basis for the product topology. So that's why we will conclude that कि this S is a sub basis. तो अब ये जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी जो हमने डिफाइन किया, इसका हमने बेसिस और सब बेसिस दोनों फाइंड आउट कर लिया एक एक। तो हमारे बेसिस क्या है, बेसिस और सब बेसिस दोनों पिछले पेज पे लिखे हैं, we have written what is the basis। तो बेसिस हमारा u क्रॉस v है, वेयर u इज ओपन इन x एंड v इज ओपन इन y। और सब बेसिस हम क्या ले रहे हैं, px इनवर्स u वेयर u इज ओपन इन x यूनियन py इनवर्स v वेयर v इज ओपन इन x। आई मीन ये हमने क्या डिफाइन किया, ये px इनवर्स u यूनियन py इनवर्स v वेयर u बिलोंग्स टू tau x एंड v बिलोंग्स टू tau y। तो ये जो हमारा ये जो कलेक्शन मिल गया सबसेट्स का x क्रॉस y का, so that will form a sub basis and this b is a basis। so these facts you have to understand carefully। okay, and this second remark is also very important। इस पे हम क्या कह रहे हैं कि let us see। सपोज कर लिए कि A हमने सबसेट ले लिया x का और B हमने सबसेट ले लिया x क्रॉस y का, सॉरी y का। so definitely this A क्रॉस B is a subset of x cross y। okay, so on x cross y how many topologies you can think। एक तो आप x क्रॉस y से सब स्पेस टोपोलॉजी ट्रीट कर सकते हैं, सब स्पेस टोपोलॉजी ऑफ दिस x क्रॉस y एज ए, if we let us treat x cross y as a product topology, product space, and let us consider the subspace topology, or independently we can consider the product topology on A cross B। so here these two are same, I mean the product topology on A cross B, product topology on A cross B is equal to the subspace topology, subspace topology on A cross B inherited from product topology on X cross Y। topology on X cross Y। तो ये दिखाने के लिए कि दोनों टोपोलॉजी सेम है, अगर हम ये दिखा दें कि दोनों के बेसिस सेम है, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द बेसिस फॉर द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन A cross B। आप बताएं। open sets in x cross y, sorry u cross v intersection a cross b। Very good। cross B intersection B, ये जो कलेक्शन बनेगा, ये क्या होगा, ये बेसिस फॉर्म करेंगे प्रोडक्ट टोपोलॉजी के। और सब स्पेस टोपोलॉजी में क्या होगा बेसिस, A क्रॉस B इंटरसेक्शन U क्रॉस V। और ये क्या है आपका, ये यही सेट तो है, A इंटरसेक्शन U क्रॉस B इंटरसेक्शन B। सो दैट मींस ये दोनों सेट सेम, ये दोनों सेट सेम है। तो हम अब A क्रॉस B पे या तो हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी ले या फिर सब स्पेस टोपोलॉजी ले, दोनों सेम है। Okay. So whatever I have explained in rough here, the same thing I have written properly in this notes। Okay. So what is the second remark? कि product topology is compatible का मतलब same, compatible with relative topology। So what I have written कि A basis for this subspace topology। So basis for subspace topology क्या होगा, A cross B intersection U cross B, where U cross B is the basis for this X cross Y। Because the basic open sets in X cross Y is what, U cross B।
इफ यू रिकॉल, अगर ए एक्स का सबसेट है तो ए के सब स्पेस टोपोलॉजी की बेसिस क्या होगी? ए इंटरसेक्शन बी वेयर बी इज बेसिस इन बेसिक ओपन सेट इन एक्स। अब ये इंटरसेक्शन क्या है? ए क्रॉस यू क्रॉस बी क्रॉस बी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन यू क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी, where u is open in x and v is open in y. So finally it can also be understood like that ki this cross this, where a intersection u is open in a and b intersection v is open in b. So this is precisely the all possible open subsets of a and b under that subspace topology. So that means what I have written with this last collection, which forms a basis for the product topology on a cross b. So that means what? A basis for product topology, a basis for subspace topology, and a basis for product topology, both are set. So that's why these two topologies are set. I mean the product topology and the relative topology on A cross B are set. So finally what we have done here, अब अगर हम I क्रॉस I पे टोपोलॉजी डिफाइन करें और R, and here it can also be understood like that. Okay, so are you getting what is the meaning of topology on I cross Y? So whatever you are understanding, both are all right. Either they consider the product topology on I cross Y or consider the subspace topology on I cross I from R cross R. Meaning of both are same. There is no difference between these two topology. As a subspace topology or as a product topology, both are same. This is exactly what we have explained. Now next we have an important note here. ये जो R2 है, अब R2 पे हमें एक तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी हमने डिफाइन किया, we can consider, and और R2 पे एक आपके पास यूजुअल टोपोलॉजी और यूक्लिडियन टोपोलॉजी भी है, but these two topologies are same. The Euclidean topology on R2 and the product topology on R2 are same. So not only for R2, it is true in general for Rn. जैसे Rn पे भी हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं, R cross R n times, और Rn पे हमारे पास Euclidean topology भी है. So these two topologies are same. So the way this product topology is defined, so it makes our life easy. तो can you tell me how to prove कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है वो यूक्लिडियन टोपोलॉजी से सेम है? अगर हमें ये प्रूव करना हो तो कैसे प्रूव करेंगे? सर इसके ओपन सेट्स उसके ओपन अंदर ओपन होंगे. दूसरा ठीक है, दूसरा अगर हम ये दिखा दें कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के जो बेसिक ओपन सेट है वो यूक्लिडियन टोपोलॉजी में ओपन है, और यूक्लिडियन टोपोलॉजी के जो बेसिक ओपन सेट्स हैं वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में ओपन है, तभी ये दोनों टोपोलॉजी सेम हो जाएंगी. Yes, it is. So this is exactly what we have explained here. So this note I am going to share with you. You will go through it, and if you have doubt, you can ask me. Okay. तो हम ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारा जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी है, first of all I am going to recall here कि जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी है that is equivalent to this कार्टेशियन टोपोलॉजी. यूक्लिडियन टोपोलॉजी आपको ध्यान हो हमने ऐसे डिफाइन करते हैं ना, दिस मैट्रिक्स है कि d of xy is equal to square root of x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square. Is it like? इसी को हम यूक्लिडियन टोपोलॉजी कहते हैं ना. और उसी R2 पे हम एक ऐसे भी मैट्रिक डिफाइन करते हैं, मैक्सिमम ऑफ mod of x1 minus x2 and mod of x2 minus y2. तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट है, दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन अंडरग्रेजुएट. ये दोनों इक्विवेलेंट है. तो दिस फैक्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर. ठीक है. तो चूंकि अब ये दोनों मैट्रिक इक्विवेलेंट है, तो जो R2 पे जो आपकी जो टोपोलॉजी D से इंड्यूस होगी और जो रो से इंड्यूस होगी वो दोनों सेम होंगे. Okay. And how an open ball in this row metric will look like? Centered at x with radius r, y belonging to R2 such that
कि distance between x and y is less than r, where x is equal to x1 x2 and y is equal to y1 y2. Oh, sorry. So now let us take if y belongs to y2 means r2 means y1 y2 and rho का मतलब क्या है कि maximum of this is less than r, so mod of x1 minus y1 is less than r and mod of x2 minus y2 is less than r. Yes, I think these two lines I have written same by mistake. Okay. और इसका क्या मतलब है mod of x1 minus y1 is less than r. Are you convinced with that? इसका मतलब है कि y1 will lie between x1 minus r and x1 plus r, and similarly y2 will lie between x2 minus r and x2 plus r. So y1 y2 such that कि y1 y2 satisfying this condition. इसका मतलब क्या हुआ कि जो y1 y2 है वो इस इंटरवल में लाई करेगा x1 minus r comma x1 plus r and x2 minus r comma x2 plus r, and these are what, तो ये हमारे क्या हो गए बेसिक ओपन सेट्स हो गए कार्टेशियन टोपोलॉजी के. Okay, and they are nothing but the basic open sets in the product topology, or we can say that कि these basic open sets are also open in product topology. So finally what we can say कि जो कार्टेशियन टोपोलॉजी है वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी में कंटेंट, and similarly you will get it कि जो प्रोडक्ट टोपोलॉजी के जो बेसिक ओपन सेट्स हैं, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी का कोई भी बेसिक ओपन सेट क्या होगा, वो ये क्रॉस प्रोडक्ट टाइप का होगा a1 b1 क्रॉस a2 b2. इसका अगर आप कोई भी एलिमेंट x लेंगे तो you will get an open ball containing x and contained in that. अगर आप कोई भी open square लेंगे यहाँ पे, so for every point we can always get a small ball containing x and contained in that one. So that's why we can say that this product topology is also contained in Euclidean topology, and that's why both are same. जो product topology ले या फिर Euclidean topology ले, they will be equal. And this is not only true for R2, but it is true in general for any and Rn. सर ये इन जनरल यही है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल होगा एंड सर्कल के अंदर हम स्क्वायर बना सकते हैं. वही चीज है, बिल्कुल. सर्कल के अंदर स्क्वायर बना लेंगे, स्क्वायर के अंदर सर्कल बना देंगे, तो इसीलिए दोनों टोपोलॉजी एक दूसरे में कंटेंट हो जाएगी और ये दोनों सेम हो जाएगी. एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. ठीक है. तो नाउ लेट अस स्टॉप हियर. अब ये आगे के जो एक्सरसाइजेस है दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट टाइम. So I think today is Friday, so we have these 4 classes are over. So earlier I think we were supposed to take some adjust our classes. So if you allow, then I can take 1 or 2 classes on this Saturday, and if not, then we continue on Tuesday. Now you tell me. Can we have 2 more class? कल परसों? Are you interested? वैसे भी हमें एडजस्ट करनी थी सर, रिवाइज करना है. आप क्लास में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं, ये बताइए. सर इंटरनल भी है सर. हैं? सर इंटरनल की डेट भी आ चुकी है. हाँ आ चुकी है, हम कहाँ करेंगे ये. Anyway, whatever we are going to discuss here, that will be the part of your internal. Not only this product topology, the entire chapter 2 will be the part of that. इसमें वो वैसे भी आपको करना है. अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर वो आप इंटरनल्स के पास जाके खत्म करेंगे. आप बताएं, अगर नहीं करना चाहते हैं, then we will discuss. Even if you will not attend, then next week I will finish it. And if you will attend, then might be little easy. नेक्स्ट वीक ही रखते हैं सर. Okay, ठीक है. Okay, so we would have next class on coming Tuesday. So I will share these notes with you, and what we discussed today. So in continuation of that, we will discuss from Tuesday onwards. ठीक है. थैंक यू सर. हेलो. Okay. Yes. थैंक यू. लास्ट क्लास में जो कोरोलरी करी थी उसका कन्वर्स पार्ट में एक डाउट है.
Okay, okay. 1 minute. Let us open. Last उसका पेज नंबर क्या है? पेज नंबर तो याद नहीं मुझे. 24. 24. हाँ बताएं. सर कन्वर्स वाले पार्ट में. सर एफ क्लोज के बाद कंटिन्यूअस कैसे आया एफ इनवर्स वो बता दीजिए. इसके बाद ये कैसे है? नो सर ऊपर जो है एफ इज क्लोज मैप देन ऊपर ये एफ इज आपकी आवाज नहीं क्लोज. आ रही. सर जो ऊपर लिखा हुआ है एफ इज क्लोज मैप देन एफ इनवर्स इज कंटिन्यूअस. अच्छा ये नहीं समझ में आया. यस सर. ओके. ये तो हमने कल भी एक्सप्लेन किया था. हमको लगा वो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन होगा. अभी ये रफ हमने शेयर नहीं किया था ना. ये हमें गिवन है ना कि एफ एक्स वाई में बाइजेक्शन है. ये हमें गिवन है और यही हम प्रूव कर रहे हैं कि अगर एफ क्लोज है तो एफ इनवर्स क्यों कंटिन्यूअस है. ठीक है ना? आर यू लुकिंग इट? यस सर. यस. तो अब हमें अब एफ अगर एक्स से वाई में मैप है तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक मैप होगा? वाई से एक्स में. तो इस मैप को कंटिन्यूअस दिखाने के लिए आप क्या दिखाओगे? आप ये दिखाओगे ना कि इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन या इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज. तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज. तो हमने एफ कोई भी क्लोज सबसेट ले लिया एक्स का. अब उसका इनवर्स इमेज कंसीडर कर रहे हैं. तो इनवर्स इमेज कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स ऑफ एफ. इज इट राइट? और यहाँ पे हमें एफ बाइजेक्शन है तो एफ इनवर्स का एफ इनवर्स करेंगे तो क्या होगा? एफ हो जाएगा. तो ये एफ हो गया. एंड विच इज क्लोज. क्यों? क्योंकि एफ क्लोज मैप है. हम ये लेके चल रहे हैं. तो फाइनली हमने क्या दिखा दिया कि इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज. सो दैट्स व्हाई दिस एफ इनवर्स इज कंटीन्यूअस. ओके सर थैंक यू. ओके ओके वेलकम. ठीक सर ट्यूसडे से ऑफलाइन क्लासेस ही है ना? हाँ ट्यूसडे को मोस्ट लाइकली 99% ऑफलाइन. अगर 1% का भी नहीं वो ऑफलाइन ही होगा. ठीक है. ओके सर. Okay, let us bye. I will share these notes what I discussed today, and what I discussed today in continuation of that we will discuss of that. Thank you, sir.